ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से कैसे रिलेट कर सकते हो, और इसके अंदर में आप कुछ प्रॉब्लम भी बता सकते हो, 2-3 लाइन में सॉल्यूशन भी दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करेंगे रिसेंट के अंदर, या तो ये बता सकते हैं कि रिसेंट के अंदर में हमारे द्वारा क्या चेंजेस किए गए, रिसेंट में मीन्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया, या आप आरटीआई एक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर आया था, तो उस समय बोला गया था कि मतलब इसके अंदर सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह होने चाहिए। तो जब 2005 के अंदर आरटीआई एक्ट आता है, उस समय इसके अंदर बोला गया था कि सारे इंस्टीट्यूशन होंगे इसके अंदर में, और कोर्ट्स को स्पेशली बोला गया था कि आप अपने तरीके से देख लो आप किस तरीके से इसको फॉलो करने वाले हो। तो कोर्ट के अंदर में हमारी 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस, एक आता है सुप्रीम कोर्ट, ये सेपरेट आ रहे हैं दोनों, और एक हाई कोर्ट्स। अब यहाँ पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जा रहा था आरटीआई एक्ट को, लेकिन उसके अंदर में भी उनके द्वारा हाफ हार्टेडली फॉलो किया जा रहा था, उनके प्रोविज़न अच्छे नहीं थे। प्लस जो सीजीआई का ऑफिस था वो बाहर था इससे, तो 2010 के अंदर में दिल्ली कोर्ट के द्वारा बोला जाता है सीजीआई का ऑफिस भी इसके अंदर आना चाहिए। अब रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हाँ सीजीआई का ऑफिस भी इसके अंदर में आएगा, ठीक है, बाकी तो ये पहले से आ रहे थे। तो ये हमारी जजमेंट है सुभाष चंद्र अग्रवाल के केस में बोला कि सीजीआई का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी है। आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर, पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर, और पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन की गई हैं एक्ट के अंदर में, ऐसी अथॉरिटी जो पार्लियामेंट या तो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हो डायरेक्टली, पार्लियामेंट ने बनाई, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई, लोकल बॉडी ने बनाई, या वो सब्सटेंशियली फंडेड की जाती हैं सरकार के द्वारा, ये इनके द्वारा बोला गया। तो इसी के अंदर में डिफाइन करते हैं कि कौन पब्लिक अथॉरिटी है। तो सीजीआई भी पब्लिक अथॉरिटी है, मतलब सीजीआई के ऊपर भी आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल होगा। और इसके अलावा बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पर्सनल एसेट हैं जजेस की, उसको डिस्क्लोज करने से कोई राइट टू प्राइवेसी वायलेट नहीं होता, मतलब उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। और बोला राइट टू आरटीआई जो है, राइट टू नो, ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते आपको सब कुछ जानना है, आपको प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा जजों का, ठीक है। इनको आप रिमूव भी कर सकते हो अगर आप छोड़ना चाहो, अदरवाइज एक एक लाइन में लिख सकते हो। और उसके बाद बोला गया कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना है तो उसके लिए क्या करो, अप्लाई करो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखो जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और उसका कितना नुकसान हो सकता है। तो आप देखो अगर फ़ायदे के मुकाबले में उसका नुकसान आप इक्वलिटी कर सकते हो, मतलब उतने लेवल का ही होता है और उसका फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आप उस केस में देख लो, मतलब उतने प्रपोर्शन के अंदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी जिसका नुकसान ज़्यादा हो और उसका फ़ायदा काफ़ी कम हो। फिर देखो प्राइवेसी भी देखो इंडिविजुअल की, और इंडिपेंडेंस भी देखो जुडिशरी की। उसके बाद में लास्ट में इनके द्वारा कुछ लिस्ट दी गई जो कि नॉन एग्जिस्टिव है, मतलब उसके अलावा भी कुछ हमारे अदर पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें इन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करने से पहले, इन्फॉर्मेशन देने से पहले देखा जाए नेचर और कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका नेचर और उसका कंटेंट क्या है, कंसिक्वेंसेस, डिस्क्लोजर, अगर आप उसको डिस्क्लोज ना करो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। फिर देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब इनके द्वारा बेसिकली ये बोला गया कुछ पैरामीटर हैं, अगर आपने इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना है तो आप देखो इन सब पैरामीटर को कि इनके अंदर में क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं हम सबको। सिग्निफिकेंस ये है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए डोर ओपन किया, हायर जुडिशरी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, तो मतलब उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है अगर वहाँ पे ओपेकनेस है तो। उसके बाद में गुड गवर्नेंस की तरफ ये इनिशिएटिव है, बिकॉज इससे ओपननेस क्रिएट होगी और इससे एक तरीके की क्वालिटी आएगी। जुडिशरी के ऊपर बोला जाता है कि जुडिशरी खुद ओपेक है और दूसरों को लेक्चर देती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के। तो ये इसमें बोला गया। फिर इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, इसमें कोई क्लैरिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है आरटीआई एक्ट के अंदर में अगर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखना है, पर्सन की राइट टू प्राइवेसी को ध्यान रखना है, प्लस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के पास होना चाहिए, तो आपको देखना है यहाँ पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपको देखना है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, बट एक्चुअल में क्या पब्लिक इंटरेस्ट होता है ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, तो इसका मिसयूज़ हो सकता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है कौन सी नहीं देनी है, उसके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है डायल्यूशन। रिसेंट के अंदर आरटीआई एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट की गई, जिसके अंदर में हमारे जो पावर थी सीआईसी और जो बेसिक जो हमारे पास में बॉडी है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, उसकी पावर्स को काफ़ी कम कर दिया गया, उनको डाइल्यूट किया गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने हाथ में ले ली ये पावर, टेन्योर डिसाइड करने की, सैलरी अलाउंस, ये सब डिसाइड करने की, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल कर रही है और इन्फॉर्मेशन तो मतलब गवर्नमेंट से ही लेनी होती है आपको। तो एक तरीके से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट जो राइट टू नो है उसके अगेंस्ट आ रही है, बिकॉज काफ़ी समय आपने देखा होगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट को लगती है उनके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है, उसके लिए उनके द्वारा बोला जाता है ये ऑफिशियल सीक्रेट है या इसको डाइवर्स नहीं किया जा सकता, तो ये इनके द्वारा बोल दिया जाता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इंक्रीज़ होगा कोर्ट के ऊपर भी, बिकॉज हमारा आरटीआई एक्ट है उसके अंदर कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं बताई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आरटीआई एक्ट पास कर दिया, इन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन तो किसी डिपार्टमेंट को देनी है,
बट ये नहीं बोला कि उसके अंदर में नए ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। इसके अंदर बोला गया डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर उसको पीआईओ अपॉइंट कर दिया जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन देगा। मीन्स एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवाए गए। मीन्स कि अगर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर में तो आपका डिपार्टमेंट का काम स्लो हो जाएगा इस केस के अंदर में, बिकॉज एक तो ये डिपार्टमेंट का पर्सन काम कर रहा है, ऊपर से ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, डिपार्टमेंट इसको इन्फॉर्मेशन देगा, उसके अंदर में भी काफ़ी बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से रिमूव करनी चाहिए ओपेकनेस। इसके अंदर में ये तो बता दिया जाएगा कॉलेजियम के अंदर में किस किस जज को रिकमेंड किया गया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि एक्चुअल में क्यों किसको रिकमेंड किया गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको और ज़्यादा इसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, ताकि ये भी पता चले कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर में आपने जजेस को सेलेक्ट किया। फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए, ताकि आरटीआई की अगर फ्रीवोलेस एप्लीकेशन आती हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लाखों की संख्या में आती हैं, तो उनमें से कुछ को पहले ही स्क्रीन करके बाहर निकाल दिया जाए और फिर जो कुछ काम किए हैं वो जाए फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में। फिर स्ट्रेंथन करो आरटीआई एक्ट को विसल ब्लोअर एक्ट के साथ में। विसल ब्लोअर एक्ट के अंदर में हमारे पास में जो भी हमारा पर्सन इनसाइड किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, वो अगर कोई रॉन्ग डूइंग को डिस्क्लोज करना चाह रहा है तो वो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है इस एक्ट के अंदर, तो इसको भी आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर आरटीआई का एम्बिट इंक्रीज़ करो, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह को भी आप डालो। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको आप छोटा करके लिख सकते हो क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी सारे पॉइंट आ चुके हैं। So the today's question is, the recent judgment of Supreme Court of India brings the office of Chief Justice of India under the ambit of Right to Information Act, and it will give fillip to people quest for transparency and accountability. So question is asking about the recent judgment of Supreme Court, in which Supreme Court said that the CGI is a public authority under RTI Act. It means that the RTI Act will be applicable on CGI. So in context of that, the question is asking that it will give fillip to transparency and accountability. So first we can start with giving the various highlights of the recent judgment, or you can start by explaining about RTI Act, how RTI Act came and what was its stance on different courts. So we have to define that Supreme Court of India and Subhash Chandra Agarwal case, a recent 5-judge bench case, they said that CGI is also a public authority. Public authority are defined under RTI Act, and if you are a public authority, it means that RTI Act will be applicable on you. Okay, so when RTI Act came in 2005, it said that the various courts, high courts and Supreme Court, they have to create their own rule to comply with RTI Act. So over a period of time, they created their own rule. So we have 3 bodies. One is CGI office, another one is Supreme Court, and another one is various high courts. So these Supreme Court and High Court created their own rules regarding RTI, and which were not as good as RTI Act was, because they had many flaws. But CGI was never under RTI Act. So in 2010, the Delhi High Court said that CGI should also come under RTI Act. And recently the judgment of Supreme Court says that CGI is also a public authority under RTI Act 2005. So if it is a public authority, then it will obviously come under RTI Act. And what are the other provisions? They said that detail of serving judges, personal asset and etc. detail, it is not a violation of their privacy, so it can be divulged. And they also said that right to know is not absolute. It is not absolute, it has to be balanced with right to privacy. Then they said that when you are divulging any particular information or making any particular information public, then you have to apply the test of proportionality. You have to see the proportion of public interest served by divulging that information in relation to the personal harm that can happen to individual. Okay, so if public interest is more, then you can divulge that information, you can share that information, that you have to do. And they also have given a non-exhaustive list of various factors which you have to consider while you are making a particular information public or giving information under RTI Act. You have to see the nature and content of information. What is it? Is it related to personal information, or they are asking about your marriage, or your asset? Because if they are asking about your personal asset, that is okay, that can serve as a check on a transparency on Supreme Court, a particular judge. But if they are asking about your marriage, how many children do you have, so that kind of information is not required.
So you have to see that. Then you have to see the consequences. If you don't disclose the information, what will be the consequences? What will be the condition of Supreme Court? Will the people consider that Supreme Court is opaque, or means what is the issue if you don't divulge that information? Last one is freedom of expression and proportionality, that we have discussed, that we have to see, we have to balance all the rights that are available to individual. Significance is that it will open door for transparency. Higher judiciary is often criticized for its opaqueness. Then it will also boost good governance, because Supreme Court sometimes try to give lectures to other institutions like Parliament or Executive for transparency and accountability, but it itself is not immune to these things. So if Supreme Court is taking first step, then obviously they can teach or they can give lecture to other institutions also. So it will also help in good governance. Then we have certain challenges. First is lack of clarity. Lack of clarity means they said that you have to see the proportionality, test of proportionality. So under doctrine of proportionality, you will see how much public interest is served versus what is the personal harm to an individual. So if public interest is more, you can share that information. In this case, what is public interest? That has not been defined under RTI Act. That is the problem. Second one is dilution of RTI Act. RTI Act was diluted by government in 2020 under 2017 Act, I think. So they have diluted this act. They said that central government will decide tenure, salary, allowance, and other term of condition. Earlier it was a committee which used to decide this, and they also decreased the salary. They said earlier the salary was fixed according to Election Commission of India, but now they have said that we cannot give the same privileges that are available to Chief Election Commission of India. So it is also a negative precedent set by government, that they are dilating. On one hand they are dilating the RTI Act, and on other hand the Supreme Court is gearing up for RTI Act. Then third is administrative burden. The 2005 RTI Act did not create any new bureaucracy. The act said, 2015 Act said that you have to give information. For example, if there is a particular department, so Act said you have to appoint a particular officer as PIO. That PIO will give information. If information has been asked, this PIO is bound to give that information. But no new bureaucracy was created. There are no new officer which we say that these officers are specifically special cadre for giving information. So if that is the case, then if you are increasing the ambit of RTI, then obviously the bureaucratic burden, the people who were already working in that organization, their burden will also increase. So in way forward, you can give some points. For example, we need more transparency. We have to give, in this case, in according to this judgment, we will give the name of people recommended for appointment in Supreme Court, but we will not give the reason why collegium took that decision. So in that case, we have to reform that process also. We have to give reason for that, and a screening committee should be there, so that the frivolous application that are coming, they can be screened out in the first place, and then the PIO can take only serious applications. Okay, it will decrease his or her burden. Then we have to strengthen the RTI. We have to strengthen the RTI with strong Whistleblower Protection Act. Whistleblower Protection Act protect the individual who are insider to a particular organization and have information about the corruption done in that organization. Then we have to expand the ambit of RTI. We have to include political parties in it also. So in this way you can conclude this question, and we will meet you on 4 February 2020. Thank you.